Kick off the meeting. All right. So with that positive thought of relaxation and the nice background, I hope everyone is enjoying the spring-like temperatures outside and getting some outdoor time. I'll just go over the ground rules quickly to allow all of us to enjoy this session. Please mute your lines if you're not speaking. Also, if you have any questions during the meeting, please type them in the chat window. Please note that we are recording this session to share with people who might not be able to attend it. Now I'm going to turn it over to our JSCNC President, Mr. Anand Shah, to start the meeting. Over to you, Anand Bhai. Thank you, Ketan. Jai Jinendra, everyone, and welcome to the March monthly meeting. We have a packed agenda today. Really two beautiful sessions planned, along with a few key announcements. So let's just get right into it. I have requested Badal Bhai and Hina Bhavi to lead us with the recitation of Mangalacharan. We're going to have a shorter version today in the interest of time. So over to you, Badal Bhai and Hina Bhavi. Okay. Jai Jinendra, everyone. Jai Jinendra. Om Namo Arihantanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ariyanam. Om Namo Uvajayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro Savapava Panasano Mangalanam Cha Sauvesim Padamam Havai Mangalam Padamam Havai Mangalam Chattari Mangalam Mangalam Arihanta Mangalam Siddha Mangalam Saho Mangalam Kevali Panato Dhammo Mangalam Chattari Loguttama Arihanta Loguttama Siddha Loguttama Sahu Loguttama Kevali Panato Dhammo Loguttama Chattari Sharanam Pavajami Arihante Sharanam Pavajami Siddhe Sharanam Pavajami Sahu Sharanam Pavajami Kevali Panato Dhammo Sharanam Pavajami. Samaro mantra. Samaro mantra bhalo navakar eche Chauda puravano sar Ena mahimano nahi par eno Artha anantaya par Sukhama samaro dukhama samaro Samaro divasane raat Jivata samaro marata samaro Samaro sau sangat samaro mantra bhalo navakar eche chauda puravano sar Ena mahimano nahi par eno artha anantaya par Yogi samare bhogi samare samare rajarang Evo samare dhanava samare samare soni shanka samaro mantra bhalo navakar eche chauda puravano sar Ena mahimano nahi par eno Artha ananta apar
68 અક્ષર એના જાણો 68 તીરથ સાર 8 સંપદાથી પરમાણો 8 સિદ્ધિ દાતાર સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર એના મહિમાનો નહીં પાર એનો અર્થ અનંત અપાર નવ પદ એના નવનિધિ આપે ભવ ભવના દુઃખ કાપે વીર વચનથી હૃદય સ્થાપે પરમાત્મ પદ આપે સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર એના મહિમાનો નહીં પાર એનો અર્થ અનંત અપાર જય જિનેન્દ્ર. Jai Jirendra. Thank you very much. So I'm going to kick off something here first real quick. Let me find my notes. So welcome everyone. Welcome to March monthly meeting, with the beautiful spring weather with us. And keeping up with our theme of holistic living. I'm delighted that we have a great speaker today among us. Our inaugural session that was led by Jyoti Shah on breath swadhyay. It was a great success. I received a lot of good feedback. So just as a reminder for those of you who were not present last month at the last monthly meeting, we kicked off this new segment on holistic living. It's a 30-minute segment, so it's bite-sized chunks. It's intended as introducing kind of a renewed focus on 3 foundational pillars around holistic living: mind, body, and soul. So with that, we have basically a curated list of speakers who either have had some thoughts in these areas, or maybe they're a practitioner in one of these, and they wouldn't mind coming to us and sharing their thoughts with us. So if you are interested, if you're listening and you're interested in speaking at a future session, feel free to reach out to me or any of the committee members, and we're happy to talk to you and figure out a plan. So today's speaker, she needs no introduction. She's one of our founding members, Dr. Indu Varia. Indu Varia is a medical graduate from MP Shah Medical College. She was Women's Sports Laureate at Medical College, and she practiced OBGYN and internal medicine in Uganda. After coming to USA, she did psychiatry residency at Duke University. She was on faculty for the last 34 years, where she was very active in clinical practice, research, and she also was involved in teaching medical students and residents. Additionally, she is also a recipient of several awards and honored with the Distinguished Life Fellow of the American Psychiatric Association. And that's a big accomplishment. Something that all of us in our community can be proud of. She's a founding member, as well as I mentioned, past president of our Jain Study Center, and she's been very active in a lot of volunteer activity space. She's done things like free service at medical camp for almost 20 years in India and Africa. She has built a primary school in rural Gujarat. I think, a few years ago, many of the old members probably will remember, we had a great review session where, she and Mahesh Bhai shared a lot of their experience
building the school and what a great impact it had on the local community in India. She's also active in the areas of women's empowerment in India, and volunteers help well, not only in our local community, um, at a national level, and I might add, probably at an international level too. Just with all the areas that she has helped out. She's currently retired. She lives in Chapel Hill, practices regular meditation, yoga, spiritual activities. And then on the fun side, she enjoys painting and playing bridge. I did know that about her because we've had discussions about some of her hobbies in the past. So in our series, without further ado, in our series on the mind, body, and soul, I present to you Dr. Indu Varya, and she's going to be talking to us the understanding of different ways of relaxation. So over to you, Dr. Varya. Thank you, Anand. Jai Jinendra to everyone. Jai Jinendra. Okay, we will continue today without Jyoti, who is expert in breathing technique and everything, but she is here with us. So that is so wonderful. So what we will do, anytime when we start anything, I start with the box breathing to just relax for 1 minute. So we will start with the, you can just see this is the regular box I can see. And in your mind, always think box breathing. So anytime you want to go to work or go to school, start with the box breathing. The box breathing you can start with the inhale 5 times, inhale 5 times, then hold 5 times, then exhale 5 times, and then you can pause. Okay, now we will all do together that count, inhale 1, 2, 3, 4, 5. Now hold it 2, 3, 4, 5. Now exhale 1, 2, 3, 4, 5. Now take a regular breath. Now do it again. Inhale number 5 by yourself. 1, 2, 3, 4, 5. Now hold it. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. And now pause. Now starting this kind of very simple thing. Anytime when you start anything, start with the, where is my, tell me what you okay. 1 minute, where am I? Here. Can you see me? No, okay. Yeah. Now you can see me. Okay, so anytime you start breathing and it really going to relax you. Okay, now we will, today's my topic is very, very simple. It's known as a tapping, or another name is EFT. EFT means emotional freedom technique. Let me take you to the slide. Okay. Today we will start with the emotional freedom technique.
And another name of the emotional freedom technique, it is known as a tapping. Very simple. And third name of the tapping, it is psychological acupuncture. Psychological acupuncture, it is just like we regular acupuncture, the Chinese, it is very popular acupuncture. It is very similar, this kind of thing. They use the needle. Here we will use the tape system to tape our body to take out all our negative and our pain from the body. This technique is very useful, and as we know other techniques like deep breathing, meditation, yoga, tai chi, prayer, and any other technique. These are the very similar the tapping medication, tapping technique. Tapping technique was originated in 1970, but it began to use in 1990. And it was by the psychologist, his name is Gary Craig, who developed this technique. Extremely useful and very simple and beautiful method that we will do all together today. This technique is helpful for people with anxiety, depression, chronic pain, fear, sleep problem, stress, or any other problem like payment of bills, family conflict, difficult time at work, food craving. So you can use this technique any place that you wish to be helpful. First of all, in this technique, you have to identify the issue. Like today, I will identify that I have a little pain on my left side of neck, that I identify the issue. My next thing, I have to identify I'm a little tense because of my slide wasn't working in the beginning. So I was little tense. So identify the issue. Wherever you have some issue in your body, identified it, that I have pain in my right leg or pain in my thigh or pain in my neck. Then also you rate the intensity. You have to rate, it is 0 means nothing and 10 means extreme. So you have to identify, like my pain in my neck, it is like a 3 today. So it's a 0 to 10. You have to identify. Then acknowledge the issue. It means, yes, I have a pain. I have a pain in my neck, but I accept it. I love and accept myself. That is very, very important to acknowledge the issue. I have a pain. I accept it. I love myself and I will take care of it. Now, then we will start the tapping on the acupuncture points. There are actually 14 acupuncture points, but today I will show you the 10 acupuncture points. And other 4 are combined with those 10 points. So I don't need to show you all the 14 points. And after tapping those 11 points, then we will rate the intensity of our pain and how much we are relaxed. So that is we have to check again. Now I will show you what are the tapping points. First of all, I will show you to all of you, but first of all on the top of the head, where in the top of the head. Number 2, you have to side of the eye where there is the eyebrow meets the nose. That is the eyebrow and meet the nose. Third point, it is where the eyebrow ends. That is the point. Number 4 is under the eye. Number 4 is under the nose. Then under the chin.
Then we have to do on the collarbone. After collarbone, we have to go under the armpit. Then we have to do the wrist. I have not shown to you here, but where we wear the watch, we have to put the tapping on the where we wear the watch. And then the karate chop. How do in the karate they do practice, that what we will do it. Now I will show you all those points to you to personally, and then we can all practice this thing and see how it goes. Okay, now we will start practicing. Every one of you have to find out that where is your pain. Any chronic pain you have, find out in your mind that I have a pain in my head, in my neck, in my arm, in my foot, in my anywhere you have a pain. Then find out those pain. And then you rate your pain from 0 means normal, 10 means maximum. So you have to find out the how much intensity pain you have. The third thing, you have to find out that how much you are tense. So you have to find out the 0 to 10, how much tense you are. Now we will all do practice together. Now, first point, you have to tap on your head. Can you see me? Now, do not try too hard. Do not do like a feather. Just tap like 10 times on your, and when you tap, you have to just say, yes, I have a pain in my left neck, but I love and accept myself. I have a pain in my left neck, but I accept and love myself. I have a pain in my neck, but I love and accept myself. Okay. Now, second point, you can use the two finger here. The two finger where there is a nose and upper brow, you can tap over there. Between upper nose and eyebrow. So I have a pain in my neck, but I love and accept myself. I have a pain in my neck and I'm not relaxed. I love and accept myself. I have a pain in my neck, but I love and accept myself. The third point. Now, end of the eyebrow and upper cheek of the upper bone, you have to do here. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. Now, next part is under the pupil, behind the here, on the cheek. Can you see me? Motor. Okay. Under the pupil and above the cheek, I have a pain in my neck. I accept and love myself. I have a pain in my neck. I love and accept myself. I have a pain in my neck.
I love and accept myself. Now, you have to go under your nose and upper lip. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. Next point is lower lip and chin. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. Now, next one is the collarbone. Here, next, our collarbone and our collarbone runs like this. We have to do collarbone runs like this. We have to end of the collarbone or like this to our end of the collarbone. Usually men wear the tie, so these are the part we just see collarbones. Okay, we tape I usually tape with my right hand to left side and left hand to right side. So I have a pain. I accept and love myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain in my neck. I love and accept myself. I have a pain and I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. Now, if in case we forgot some point or something, so usually I do it. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I accept and love myself. Now, the next point is under your armpit. How to go under your armpit and मैं some hold करता हूँ. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. And same thing other side. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. Now, next point, it is the wrist where we wear the watch. We wear a watch. Here you can see the two lines on the wrist, and after these two lines over here, you tap it. I have neck pain. I accept and love myself. I have a pain. I accept and love myself. I have a pain. I accept and love myself. I have a pain. I accept and love myself. I have a pain. I accept and love myself. And the last point is karate point. So this is the in karate they do the chop, karate chop. So that is very important. I have a pain. I love and myself. I have a neck pain, but I accept and love myself. I have a pain, but I love and accept myself. I have pain, but I love and accept myself. I have a pain, but I love and accept myself. Now those are point are done. Now we all going to do together and find out your point or issue, and we all going to do together. We have to do this 3 times. Okay, we will start again from the overhead. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain.
I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. End of the Bible. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept. 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 Then under the armpit, I have a pain. I accept. I have 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 a 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 pain. I accept. Then on a Rachel, I have pain. I accept. I have pain. I accept. I have a pain. I accept. I have a pain. Accept. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept myself. I have a pain. I love and accept. I have a pain. I love and accept. I have a pain. I love and accept. Now, everyone, just go back to your pain and count how much pain you had before and now. Small curve. Now, everyone, can you check your pain point and relaxation point? How much that you have feel relieved, or how do you feel? It is this technique, it is so wonderful and extremely useful. But only thing, you need to do 3 or 4 times per tapping, and then you will just say that you have to accept your feeling that yes, I have this pain, I am under pain, I'm accepting this pain, and still I love myself and I will accept that pain. This kind of feeling, many times chronic pain or relaxation or so many things, are the very deep rooted. So many childhood trauma, so many different trauma. Like you are coming back from the work and your boss are so upset on you, and you are so upset because why boss was upset, but you need to let boss, then you have to find out the feeling. The boss was upset because even I did my wonderful job. Boss was upset even though I did a wonderful job. That is reason I'm upset, but I love myself and I accept myself. Once you do 3, 4, or 5 times, it's does something miracle. It's miracle.
and you can check it out and see how do you feel. Anyone has any question, please feel free to call me. There is a millions videos on the YouTube about this tapping mechanism. Extremely helpful. Very only 3-minute job. It is a self-help. You don't have to go anywhere. You have to do it by yourself and practice and use this technique anytime, and it will be very helpful to all of you. Jain Jinendra, and thank you. Induandi, thank you. It helped me. Oh, Right. really? I was having a pain, but I don't know it's psychologically or what, but it really went away. So Yes, yes. I'm not just joking or not telling you or this is, but people who have so many surgeries and still they have a pain, and pain doesn't go away, and it remains there. By doing this simple technique is so helpful. So many research has been done, so many MRI has been done, so much cortisol level done. When we are very tense, our cortisol level goes down. By doing this tapping mechanism, the 40% cortisol level goes high. So it means you are get less relaxed. I mean, you get much more relaxed. So Then one more follow-up question to that. I mean, I don't know, is it like only to the physical pain, or it also applies to external stress? external stress, very helpful, extremely helpful. Yes, like if you are overloaded, yes, I think maybe I mentioned to you that it helps for anxiety, depression, chronic pain, fear. Like if I have a cockroach fear, then if you have a cockroach fear or any animal fear or anything, get get rid of it. People who have panic attack, people who have a sleep problem, people who have a family conflict, people who have a difficult time at work, people who have sometimes I crave for ice cream or chocolate, and I do this technique, and it goes away, and it goes away. We Uh, apply to the kids. yes, yes, it is very, very helpful to kids. Extremely helpful. You can see the video on. There is so many videos, and it is helpful. And then you can apply where you can apply to your problem. Thank you very much, Indu Aunty. This was, very helpful. As I was saying, the tension that I had about conducting the meeting is already gone. So it's going to be a smooth sail for me from now on. Yeah, I was little kind of tense because my first slide wasn't working, and I just become little tense, and there was some little pain, but I do not have pain anymore. So I don't have. Induandi Yes. definitely helped me relax. I have an ankle pain and I focused on it and I could feel my pain gone and I actually feel relaxed in that part. Believe me, it will going to relax you if you practice, and there is all the points, and it's very, very helpful. It is, if I consider, it is 74% to 80% helpful. Yeah. It is that much helpful, and so you have to practice and try it. And there is a if anyone wants, there is a, the person who really did is Gary Craig. His video, you can watch it. Another one is Stefan Gonick. His video, there is, if you open the YouTube, you will see the thousands and thousands video. How many time we have to do it in a day? Oh no, not on a day. No, the day you have pain, you can do. I usually do 4 times. Thank But you. one thing is very important is identify the feeling. I am sad because my neck hurts, but I am love myself and I accept myself that I have pain. So those issues you have to find out, and find out what is that. I am upset with my boss because
I have worked very hard. That is reason I'm angry, but I love myself and I accept myself. Thank I you. feel It like helps. that rubric is really important, right? You want to identify. Identify and then acquire all these acupuncture points. Correct. Yeah, those are the acupuncture points. They are doing with the needle, but we are doing with the by tapping. Okay. Thank Great. you. I'm going to pull up. We've started, collecting some feedback from the community. So I'm gonna pull up a QR code real quick. Badane Vinantiche, all the participants, take out your phone and just scan the QR code. There are very few basic questions. Any feedback you have regarding the question or any follow-up regarding the session or any follow-up questions, you can put that in the form and I will compile all the responses and share it with Indu Auntie as well. And we'll do that for future sessions too. So all the speakers have some feedback. And it's not a 50 question form. It's a very simple form. So I'll leave it up the QR code. But Indu Auntie, thank you so much for spending the time with us this morning. And it's a great start to this session. Thank you. So while everyone is, working on the QR code, let me just real quick check. Vaibhav Shri ji, are you with us? If you are, if you can unmute and maybe turn on your video so we can make sure you are here. Vaibhav Shri ji, if you can hear us, please speak. Yes, I can hear you. Okay, very good. Jai Ho. Jai Can Ho. you listen me? Yes, yeah. You are But coming video in is loud not and showing. clear. So you are Video is coming not in loud showing. and clear. That's good. But video is not showing. No, I see the video. Okay. Okay, all right. So we will now move to our next segment. Okay. Today we have an amazing speaker, someone who is going to be speaking to us all the way from India, Pujya Agamveta Vaibhav Shriji. Some of the community members who have been taking advantage of our Sunday Swadhyay series, which we recently started, a few weeks ago, is already familiar with her. But those of you who have not attended the Swadhyay, I will go through a brief bio and give everyone an introduction. So Agamveta Vaibhav Shri ji, she's a multifaceted personality. You can call her a sadhvi, a philosopher, a motivational speaker, or a contemporary thinker. She's born in Jodhpur, which is, for those of you who are familiar with geography of India or not familiar with geography of India, that's in Rajasthan, India. It's one of the western states, neighboring states to Gujarat. While studying, BA from Kamala Nehru University in Jodhpur, she became more inclined towards religion and took austerity at the young age of 20. She's very well versed in Eastern and Western philosophies like Jain Agam, Veda, Quran, and Bible. Pujya Shri Virat Guruji was her spiritual guru and source of inspiration. She's an original thinker, I might add an erudite saint. She is widely known for interpreting ancient scripture in a contemporary style. Having authored more than 25 spiritual books, she has delivered hundreds of discourses and workshops that particularly appeals to the youth and forward thinkers. Some of you might be familiar with the series of YouTube lectures that she has, and it has like an amazingly high number of followers that I have seen. And a majority, if you look at the
commentary. A lot of younger generation, post wonderful comments for each of those YouTube videos. She's a devoted Guru Bhakt, gifted with a beautiful, calming voice, very humble, very affectionate, and a vibrant persona. Her clear vision, impeccable knowledge makes her an extraordinary orator. As Lord Mahavir once said, mano mat jano. What that means is don't just blindly believe, but gain a complete understanding. Continuing with the leadership of Lord Mahavir, she is now upgrading herself in a new dimension of life. In August of 2021, Sadhvi Vaibhav Shriji decided to give up her Sadhvi attire and took a giant leap to find her own truth with Swami Vikas Jain and the conviction that religion is all about inner harmony and not limited to any specific person, place, traditions, and thoughts. The thoughts and views of Vaibhav Shriji are not only spiritualistic, but also scientifically analytical, which is very relevant in this modern age. And I would say, especially in the United States, where questioning the established beliefs and spiritual system seems to be the norm, right? So she puts forward that tradition, and she should be validated with the touchstone of one's own intelligence and modified to suit current times. So with that, I am so delighted to introduce to you and present to you Pujya Vaibhav Shriji. She's going to be talking to us about Jainism and more specifically how to apply Jain values in day-to-day life. And I requested her to cater her content to more of a North American life, and she has assured me that most of her thoughts are typically very easy to apply no matter where you are. So, I look forward to an engaging session. Just a couple of ground rules before I turn it over to her. If you have any questions, and she loves questions, if you have any questions, let's use the chat feature to pose those questions, and I will try to find an opportunity to pose those questions to her. But she might also poll the audience once in a while, and that's okay to respond if you at that point would like to interject and say something. She loves interactive sessions, and she's very delighted to speak to us. We're a small community, but that's exactly the kind of setting that she enjoys speaking to. And then after the session, if you have any feedback regarding the session, feel free to reach out to any one of us. You can reach out to me. My information is on our JSCNC website, and I'm happy to discuss it further. So with that, Pujya Vaibhav Shriji, please go ahead. Jai Ho. Arihantaram namo sethanam namo ayariyanam namo uvajhayanam namo loe savasahunam esu panchinamukkaro savapavapanasano Mangalanan cha savesim padhamam havai mangalam. गुरु चरणों में प्रणाम। समस्त गुरु भक्तों की असीम श्रद्धा और भावनाओं को बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। नॉर्थ अमेरिका की ये जो रालेगांव की सोसाइटी है, जिसके जेना के हेड आनंद शाह जी है,
और प्रवीण शाह जी, आप सब ने अपनी मंथली मीट में हमें इनवाइट किया और आप ये चाहते हैं कि जो जैन यूथ है, यूएसए में रह रहा है, उसे कैसे हम इंट्रोड्यूस करें अबाउट जैनिज्म, कि वे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में जैनिज्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बात केवल यूएसए के लिए ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड जितने भी जैन लोग जहां भी रह रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही करंट टॉपिक है। तो जैनिज्म को हम डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस टॉपिक पर बात शुरू करने के साथ ही पहले मैं चाहूंगी कि कुछ चीजें क्लियर हो जाए। उसमें फर्स्ट थिंग यह कि आज जिसको हम जैनिज्म के नाम पे समझ रहे हैं, आज जैनिज्म के नाम पे जो कुछ भी मत, सिद्धांत, बिलीव्स, मान्यताएं हम अपनी करंट जनरेशन में और अपनी ओल्डर जनरेशन में देख रहे हैं, अगर हम देखें उनका असली जैन धर्म से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। Can you go on mute, someone? Sheetal Sakla. I think. Ketan, can you intervene? Sorry about that. आज जिसको हम जैन धर्म समझ रहे हैं और जिसको हम जैन समाज कह रहे हैं, ये जो पिक्चर जैनिज्म के हमारे सामने है, इस पिक्चर को देख करके ही मुझे नहीं लगता कि कोई यंग ब्लड, कोई अवेकन्ड माइंड वाला व्यक्ति इस जैनिज्म के लिए श्रद्धा से भरे, क्योंकि यही तो एक वह धर्म है जो आदमी को फियरलेस होना सिखाता है। और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ तो मोस्टली लोग सब फियर के साथ ही जी रहे हैं। हम सबके भीतर बहुत ज्यादा कर्म बंधन का डर, पाप का डर, समाज का डर और न जाने कितने तरह के डर मौजूद है। और जब तक डर मौजूद है और इन बहुत तरह के फियर्स को हम प्रोपोगेट करते हैं, खुद भी फियरफुल है और दूसरों को भी फियरफुल बना रहे हैं, it means we are not going on the right way, on the right path. Actually, we are not Jain. So, पहले तो ये क्लियर करते हैं कि जो कुछ आज जैनिज्म के नाम पे चल रहा है, उसका जैन होने के साथ में कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया फियर, कि हम सब फियरफुल है और फियरफुल बनाए जा रहे हैं, चाहे किसी भी नाम से, तब तक हम जैन तो नहीं हो सकते। एक बात। एंड द सेकंड पॉइंट, जब तक हमें चीजों को मानना सिखाया जा रहा है, रिसर्चर होने की बजाय, खोजी होने की बजाय, जिज्ञासु होने की बजाय हमें यह सिखाया जा रहा है कि बस बिलीव कर लो, श्रद्धा कर लो, विश्वास कर लो, मान लो, तब तक समझना कि हम जैन पाथ पे तो नहीं है। क्योंकि जैन पाथ जो है
जैन वे जो है वो मानने वालों के लिए नहीं है, वो जानने वालों के लिए है. दिस इज द वे टू नोइंग, टू नो योरसेल्फ एंड टू नो दिस यूनिवर्स ऑल्सो. ब्लाइंडली किसी पे भी फेथ करना, भरोसा करना, विश्वास करना या किसी सिद्धांत को भी मान लेना बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के, आप किसी भी बात को अगर मान रहे हो आंख बंद करके, तो आप जैन वे पे तो नहीं हो. तो मैं ये कुछ बातें इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी तक हमारे नजरों में जो जैन वे चल रहा है, जिसको हम जैनिज्म कह रहे हैं, जैन समाज कह रहे हैं, वहां पर ये सब बातें हैं. लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कर्म पे, मैं विश्वास करता हूँ आत्मा पे, मैं विश्वास करता हूँ धर्म पे, मैं विश्वास करता हूँ साधु पे, मूर्ति पे, पूजा पे, मैं विश्वास करता हूँ. जब तक ये विश्वास करने वाली बातें हैं तब तक वहां पर जैन वे है ही नहीं. क्योंकि जैन वे नहीं कहता कि टू बी बिलीवर. जैन वे कहता है टू बी रिसर्चर, खोजी बनो, जानने वाले बनो. आप कहोगे ऐसी बात आप क्यों कह रहे हो, तो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ. क्योंकि जैन शब्द का इटसेल्फ जो मीनिंग है वह है जो जानने वाला है, वन हु इज नोअर, जो जानने वाला है. जिन, वह जिन है जिसने खुद को जान लिया, जिसने खुद को जान लिया कंप्लीटली, हु नोज हिमसेल्फ. दूसरों की रेफरेंस से नहीं, किसी के कॉन्टेक्स्ट से नहीं, खुद के अनुभव से. जिसने खुद को जाना वो जिन है, और जो खुद को जानने की यात्रा पे चला है वो जैन है. यहाँ जैन का संबंध किसी कास्ट से, किसी क्रीड से नहीं है. हम जन्म से कभी जैन होते ही नहीं है. जैन इज अक्वायर्ड क्वालिटी. To be Jain is just like to get an adjective with your life. ये एक विशेषण है जो हमने अक्वायर किया है अपनी विशेषताओं के द्वारा. जैसे महावीर का नाम महावीर नहीं था, उन्होंने महावीर नाम अपनी भीतर की कुछ क्वालिटीज के कारण से अक्वायर्ड किया. उनको लोगों ने महावीर कहा. क्यों महावीर कहा? क्योंकि वो कभी भी किसी भी हालत में घबराए नहीं, डरे नहीं, और दूसरों को जीतने की बजाय खुद को जीतने में लगे. इसीलिए वो वीर ही नहीं महावीर कहलाए. देवताओं ने बताया कि हमने इनको भयंकर यातना दी लेकिन ये फिर भी नहीं घबराए, इसका मतलब है ये वीर ही नहीं महावीर है. तो ये महावीर होना उनका नाम नहीं था, ये उनकी क्वालिटीज की वजह से उनको मिला हुआ एक सम्मान था, एक विरुद्ध था, एक एडजेक्टिव था. ऐसे ही जो जैन शब्द है वो कोई जन्म से कोई जैन हो जाए पॉसिबल ही नहीं है. कोई वो व्यक्ति जिसने अपने आप को जानने के मार्ग पे आगे बढ़ रहा हो, रिसर्चर हो, खोजी हो, सत्य का खोजी हो, धर्म का खोजी हो, वो व्यक्ति जैन हो सकेगा, हो सकता है. खोजी जैनी होगा, मानने वाला नहीं. मानने वाला भक्त होगा, मानने वाला कोई और तरीके की यात्रा पे जा सकता है, पर जैन होने का मतलब है जो जानने की यात्रा पे चला है. We should be very clear about the word meaning of Jain also. जो खुद को जानने की यात्रा पे चला वो जैन, जो खुद को जान चुका वो जिन. ऐसे ही जो खुद को जगाने की यात्रा पे चला उसी को हमने बुद्ध बोला था कि जो जाग चुका वो बुद्ध, और जो जागने की यात्रा पे वो बौद्ध. और हम सब ने इन सब ज्ञानी पुरुषों के शब्दों को सांप्रदायिक अर्थ दे डाले. मतलब हमने इन सब चीजों को अपने अपने सोच में बांट दिया और फिर सबको अलग अलग कर दिया. इसीलिए मैं कई बार समझती हूँ कि जो जिसको आज हम जैन समाज कह रहे हैं इसमें तो कोई थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग भी जैन मिल जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है. लेकिन पूरी दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो वैज्ञानिक है, जो इंजीनियर होंगे, जो डॉक्टर होंगे, जो कई अलग अलग फील्ड्स में होंगे, और जिन्होंने हो सकता है इस जैन धर्म के शब्दावली को कभी सुना भी नहीं हो, पढ़ा भी नहीं हो, लेकिन वो अपने जीवन भर खोजी है, खोज कर रहे हैं
और उनकी खोज का विषय केवल बाहर की दुनिया ही नहीं, अपने आप की अंतर की दुनिया भी है। और जो अपने अंतर की दुनिया के लिए जागरूक होकर यात्रा कर रहे हैं वो जैन है। चाहे वो एकांत ध्यान में बैठे होंगे, चाहे मौन में होंगे, चाहे ध्यान और मौन न करते हुए कर्म योग को साध रहे होंगे, लेकिन वो असली जैन है जो जागरूक होकर के अपने आप को जानने और खोजने के लिए सतत तत्पर है, सतत निष्ठावान है कि मैं यहाँ पे इस जीवन में आया क्यों, मैं अपने आप को जानू, मैं हूँ कौन, किस लिए आया, किस दिशा में जा रहा हूँ। जिनके भीतर ऐसे कोई प्रश्न खलबली मचा रहे हैं कि मैं हूँ कौन। और ये हकीकत है, हम सब लोग इस दुनिया भर की जानकारियां गूगल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद को जानना हो तो वो तो हमें कोई गूगल नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ। वो तो हमें अपने ही भीतर झांक करके जानना होगा ना। और ये प्रश्न खलबली मचाए, ये प्रश्न भीतर उठ जाए, ये जिज्ञासा भीतर उठ जाए कि सारी यात्रा जो मैं कर रहा हूँ, मुझे दिखलाई पड़ रही है, वो सारी यात्रा का अंत क्या है। एक क्षण में मौत आती है और जितनी भी हमने चीजें इकट्ठी की है वो सब बाढ़ में कैसे कोई तिनका बह जाए, ऐसे सब बह जाती है। तिनका तो शायद किसी दिन वापस बाढ़ में ऊपर भी दिखलाई पड़ जाए, लेकिन जो हमने संयोग, जो भी सामान इकट्ठे किए, जो भी सम्मान इकट्ठा किया, जो पहचान इकट्ठी की, जो भी सारी हम जिंदगी भर जिन चीजों के पीछे लगे हैं, वो सब चीजें क्षण भर में, क्योंकि आंख बंद हुई और ये सपना खत्म, नया सपने में चले जाएंगे, तो हमने खुद को तो जाना ही नहीं। तो ये जो सेकंड पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि वो जैन नहीं हो सकता जो बिना जाने, बिना जानने की रिस्क लिए, बिना जिज्ञासु बने ये सोचता हो कि मैं जन्म से घर में पैदा हो गया और जिस घर में तो मैं जैन हो गया हूँ। नहीं नहीं, उसका जैन होने से कोई नाता नहीं है। वो कहला सकता है जैन, क्योंकि आजकल कहलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में जैन कोई जाति नहीं है। जैन एक वह पद है, एक वह काबिलियत है, एक वह योग्यता है जो आदमी को अपने जीवन से खुद से ही प्रकट करनी होती है। तो हम इस जैन शब्द को अगर समझ लेंगे तो हमें जैनिज्म की पकड़ खत्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था कि जो फियरफुल है वो जैनी नहीं हो सकता, एंड द सेकंड पॉइंट जो बिलीवर है, ब्लाइंडली बिलीवर है, वो जैनी नहीं हो सकता। एंड द थर्ड पॉइंट वो भी हम जरूर पहले से ही क्लियर कर लेते हैं कि जैनी होने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम कुछ नियमों को पाल ले तो हम जैनी हो जाएंगे। जैसे कि जैन समाज में कुछ नियम है, रात को नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना, फला खाना, फला नहीं खाना, फला पहनना, फला बोलना, फला जगह जाना, फला क्रिया करना, फला दिन फला नियम पालन कर लेना तो हम जैनी हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, केवल कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स और कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर लेने से, कुछ कस्टम्स को फॉलो कर लेने से हम जैनी हो जाते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल नहीं। हम कहला सकते हैं लेकिन हो नहीं सकते। दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट कि जैन के आगे जो हमने ISM लगा दिया, जैन इज्म लगा दिया, वैसे ही हमने फिर गड़बड़ी कर दी। क्योंकि जैसे हम इज्म लगाते हैं वैसे ही हम चीजों को संकुचित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, और सीमित करते ही अपने अपने आप को भी एक जैन होने के साथ आइडेंटिफाइड करना शुरू कर दिया कि हम जैनी हो गए। लेकिन जैन होने का मतलब ही है जो इस सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से जाग चुका है, वो सारी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को परिचित कर चुका है कि ये सारा मैंने जो भी लबादा ओढ़ा हुआ है, जो कुछ भी मैंने अपने आप के साथ कलेक्ट किया है, इट इज नॉट रियल मी, वो मेरा असली स्वरूप नहीं है। जिसको ये समझ आ गया है वही तो इस यात्रा पे आगे चलेगा। तो हमने इज्म लगा के फिर एक गड़बड़ी कर दी, जैनिज्म। इट्स ओके, हम बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ राइट वे टू स्पीक एंड टू थिंक ऑल्सो। जैनिज्म इज नॉट अ इज्म। जैन होने का मतलब जानकार होना। और अब जैन होने के लिए क्या क्वालिटीज हम अपने अपने डेवलप कर ले कि हम जैन हो सके, अब हम उसकी बात करते हैं। पहले हमने 4 पॉइंट्स वो क्लियर किए कि ये अगर हम इससे हम मान रहे हैं कि हम जैनी हैं, तो नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू बी जैन। ओके, अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जा रहे हैं इस टॉक के कि तो कैसे हम जैन हो सकते हैं। उसके लिए भी हम बात करते हैं फिर से 4 शब्दों की।
अगर वो 4 क्वालिटीज हम अपनी लाइफ के अंदर डेवलप करते हैं तो इट मे कि हम जैन होकर के अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, खुद को जान सके, जिसके लिए हम जीवन में आए वो कंप्लीट कर सके। तो चलो हम बात करते हैं वो 4 क्वालिटीज क्या क्या है। द फर्स्ट क्वालिटी टू बी जैन इज टू बी नॉलेजेबल, टू बी अंडरस्टैंडेबल, समझदारी होना। समझदारी होना जैन होने के लिए, या टू बी जैन या जैनिज्म, जिसको हम आपने टॉपिक दिया जैनिज्म इन डे टू डे लाइफ, हाउ कैन वी अप्लाई जैनिज्म। तो मैं यह कह रही हूँ नॉट ओनली जैनिज्म, टू बी जैन वी शुड बी अंडरस्टैंडेबल। हमें अपने भीतर समझदारी प्रकट करनी होगी, और समझदारी सबके भीतर है। दुनिया में कोई इंसान तो ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर समझदारी ना हो। समझदारी का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो जानते हुए करें, वो जागते हुए करें, चाहे सोच रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे कर रहे हैं। हम हर एक क्रिया में जागरूक रहे तो हम समझदार होते हैं। हम हर एक क्रिया को जानते हुए करें, होशोवास में करें, जानते हुए करें, तो हम समझदार होते हैं। अब बात यह है कि जब समझदार सभी है तो या समझदारी को लिए क्यों जैन होने से समझदारी होती है, समझदारी होने से जैन होता है, ऐसा क्यों जोड़ा जा रहा है? तो एक वर्ड और इसके साथ हमें कनेक्ट करना होगा कि हम सब की जो समझदारी होती है ना, वो अक्सर दूसरों के प्रति हो रही है। हम दूसरों को देख देख करके सोचते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा बोलना चाहिए, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनको ऐसा सोचना चाहिए, इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक अदर ओरिएंटेड हम अपनी सारी समझदारी को अप्लाई कर रहे हैं, तब तक हम जैन होने के पथ पर नहीं है। समझदार सभी है, लेकिन तकलीफ क्या है कि हम अपनी सारी समझदारी को दूसरों पर केंद्रित करके जी रहे हैं, और पूरी टाइम हमारे माइंड के अंदर जो फाइल्स चल रही है वो इसी तरह की चल रही है। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है, और किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इस डायरेक्शन से हट करके ऐसे हो जाए कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, अपनी लाइफ को किधर लीड कर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, मेरे जीने की हर क्रिया का मकसद क्या है, अगर हम पूरी टाइम अपने आप के प्रति सजग होकर के जीने लग जाए, तो पता है क्या होगा, हमारी सारी समझदारी बाहर अप्लाई होने की बजाय खुद के ऊपर अप्लाई होने लगेगी। अब हम बाहर से भी सीखे चाहे कहीं से भी सीखे, लेकिन अप्लीकेशन खुद के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारी दृष्टि अपने ऊपर आ गई तो। यहाँ से यात्रा शुरू हो कि हम अपनी बुद्धि का, अपनी समझदारी का उपयोग जो है वो दूसरों को रीड करने में नहीं, खुद को रीड करने में लगाए। दूसरों को जज करने के लिए नहीं, दूसरों को इवेल्युएट करने के लिए नहीं, खुद के लिए लगाना शुरू करें। तो पता है बड़ा मजेदार होगा कि जैसे ही हम बढ़ने लगेंगे, हमारे भीतर की समझ बढ़ने लगेगी, तो हमारे भीतर शुद्धि चालू हो जाएगी। समझ बढ़ने के साथ ही शुद्धता चालू हो जाएगी। No. Beat that one. समझदारी या नॉलेज बढ़ने के साथ ही साथ अगर प्योरिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स नॉलेज राइट वे पे जा रही है। नॉलेज बढ़ने के साथ अगर प्योरिटीज नहीं बढ़ी, इम्प्योरिटी रह गई, इसका मतलब है नॉलेज राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी, जिसको हम सबके पास वो क्वालिटी तो है ही, बस हमें उस क्वालिटीज को अपनी दिशा में अपने आप पर यूज करना है कि कैसे हम अपनी समझदारी को अपने ऊपर लगाना शुरू करें। अब आप कहोगे ये कोई बड़ी बात है, समझदार हम सभी, हम सबको पता है क्या कैसे कपड़े पहनना, कैसे बोलना, कैसे खाना, लेकिन क्या हमें अल्टीमेट पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं? अगर ये नहीं पता है तो अभी हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें अपने आप से सवाल करना होगा कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ उन सारे कार्यों को करने के पीछे उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। तो हम क्यों ना खोज करें कि हम सब लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि है, समझदारी है, तो हम अपने ऊपर अप्लाई तो करेंगे ना।
अप्लाई करें, खोजिए, तो समझ आएगा कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या यही पर्पस है कि बच्चे हुए, जवान हुए, पढ़ाई लिखाई करी, पैसा कमाया, शादी करी, बच्चे किए और बच्चों की चिंता करते रहे, और जितना कुछ इकट्ठा किया था वो सब कुछ छोड़ करके एक दिन आंख बंद करी और मर गए, जैसा कि हम अपने चारों लोगों को करते हुए देखते आ रहे हैं। क्या यही सब कुछ करने के लिए हम पैदा हुए हैं? नहीं नहीं, इतना कुछ तो नहीं, कुछ और के लिए हम आए हैं। हम केवल इस फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए और फिजिकल अपनी आइडेंटिटी को इस दुनिया के अंदर कुछ स्टेब्लिश करने के लिए पैदा नहीं हुए। कुछ और है हमारे भीतर जिसको हमें एक्सप्लोर करना है। वो क्या है? खोजेंगे तो पता लगेगा कि हम सारे लोग अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, विस्तृत करना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, लेकिन हम सब फैलने की दिशा बाहर की दिशा में सोचते हैं कि बाहर कैसे हर चीज को बढ़ाता रहूं, फैलता रहूं। लेकिन जो जानकार लोग हैं उन्होंने बताया कि बाहर में हर चीज लिमिटेड है और हर चीज टेम्परेरी है। कि हमारे भीतर एक और डायमेंशन है जो अनलिमिटेड है, जो परमानेंट है, और उसको हम कैसे रेस कर सकते हैं, उसके लिए ये इंसान का जीवन में हम आए हैं। इसको ऐसे समझे कि एक कॉन्शियस डेवलपमेंट है, एक फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए तो हम सारे लोग लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन उससे किसी भी आदमी को शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, या उसको कह दो कि उसको खुशी तो मिलती है लेकिन परमानेंट खुशी नहीं मिलती। और हम सब लोग खुश होना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, दुखी कोई भी नहीं रहना चाहता। दुख किसी को भी नहीं चाहिए। सबको क्या चाहिए? यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है आनंद शाह, है ना? अच्छे से याद रह जाएगा। सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। हर कोई व्यक्ति आनंदित जीना चाहता है, कोई भी कष्ट में नहीं जीना चाहता, कोई भी दुख में नहीं जीना चाहता। और आनंदित भी कैसा आनंद चाहिए सबको? हम सबको परमानेंट आनंद चाहिए, टेम्परेरी आनंद नहीं चाहिए जो आज और कल चला जाए, जो आज तो हंस रहा है कल नाराज हो जाए, रूठ जाए। भैया ऐसा आनंद नहीं चाहिए हमको। हमको ऐसा आनंद चाहिए जो परमानेंट जॉयफुल रहे। वो आनंद कैसे हो सकता है? उस दिशा में अपनी समझदारी का उपयोग करना, दैट इज द राइट वे टू बी अंडरस्टैंडेबल। राइट नॉलेज तभी होगी जब हमें ये समझ में आए कि हमें आनंद चाहिए, और उस आनंद को हम परमानेंट कैसे अपनी जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं, उस दिशा में हम कैसे जाए। तो हमने अपनी जो योग्यता है, जो काबिलियत है, उसको हमने राइट वे पर उसका यूज किया है। और राइट वे में यूज करेंगे तो पता क्या होगा? अब अपनी सारी समझदारी हर घटना में इस बात को प्राथमिकता देंगे कि हम सब लोग अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं। हम सब लोग इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस चाहते हैं। और वो कैसे मिल सकती है? वो तभी मिल सकती है जो जब हम अपनी काबिलियत को अपने कॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए यूज करने स्टार्ट करें। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी टू बी रियल जेन। अब इसके लिए हमें किसी रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें हर काम को करते हुए केवल जागरूक रहने की जरूरत है। जैसे हम दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं भी कुछ भी काम करने जा रहे हैं, तो हमारे पास में पर्पस क्लियर है कि हम ऑफिस, दुकान, जॉब इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना है। जैसे कोई शादी कर रहा है तो उसका पर्पस क्लियर होगा शायद कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ। एक में क्लियर हो, कई लोगों का क्लियर नहीं होता है, लेकिन इट शुड बी ऐसे। आप कुछ कहीं भी घर से बाहर जा रहे हो तो आपका पर्पस क्लियर है। ऐसी हर घटना में हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हर चीज हम इसलिए कर रहे हैं हम आनंदित हो सके। तो हमारा वो परमानेंट आनंद कैसे पॉसिबल है, उस दिशा में हम अपनी समझदारी का उपयोग करने लगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि कल गुस्सा किया और दुख पाया, तो अब गुस्सा करके दुख पाने का ही रास्ता मुझे जीना है, या वो रास्ता नहीं जीना जैसे गुस्सा करो और दुख पाओ। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अब मैं उस ऑप्शन को खोजने लग जाऊंगी। तो इस तरह से जिंदगी भर में अपनी गलतियों से, अपने परिवेश, अपने वातावरण, एटमोस्फेयर में मौजूद लोगों की गलतियों से सीखती जाऊंगी, और सीख करके खुद को डेवलप करती जाऊंगी। तो क्या हुआ? मैंने अपनी समझदारी को अपने ऊपर प्रयोग करना शुरू किया, और लक्ष्य एक ही रखा कि मुझे इंडिपेंडेंट परमानेंट हैप्पीनेस की जिंदगी जीनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ।
और वो पॉसिबल तभी है जब मैं अपने आप को शुद्ध करती जाऊं, प्योर करती जाऊं। एंड दैट वे मैं अपनी समझदारी को बढ़ाती जाती हूँ, ज्ञान को बढ़ाती जाती हूँ, और वो ज्ञान वो है जो मुझे हल्का करता है। अब मैं यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ जो हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, शास्त्र रट लिए, ठोकरे रट लिए, फिर कुछ क्रियाएं कर ली, हमको लगता है हम ज्ञानी हो गए। लेकिन अंदर में देखते हैं तो अंदर में तो हमारे भीतर उदासी भरी है, निराशा भरी है, किसी फ्रस्ट्रेशन भरा है, कुछ डिजायर्स भरी है, और वो सब को लेकर के हम परेशान है। इसका मतलब है हम ज्ञानी नहीं हुए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, टू बी जैन हम समझदार बने और अपनी समझदारी को अपने कॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए लगातार उपयोग में लेते जाएं। तो क्या होगा, हमारी सेल्फ स्टडी जारी रहेगी। अब तो सेकंड पॉइंट कि कैसे हम जैनी हो सकते हैं, कैसे हम जैनिज्म को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं हर मोमेंट में। उसका सेकंड क्वालिटी जो हमें अक्वायर करनी है, हम सबके पास तो है ही, बस हमें उसके प्रति थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। वो सेकंड क्वालिटी क्या है? टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। ये बहुत बड़ी घटना है। जैसे सुनने में तो बहुत छोटी सी बात लगी, अरे ईमानदार होना क्या बड़ी बात है, ईमानदार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम है ईमानदार? क्या हम ऑनेस्ट है? जैसे भीतर वैसे बाहर है? अगर हम अपने से बात करें तो हम सबको पता है अपने अपने अंदर की चोरी, कि हमारे कितने सारे चेहरे हैं। वी ऑल आर मल्टी फेसेटेड। किसी के सामने कुछ और, किसी के सामने कुछ और। जैसे भीतर है वैसे हम बाहर नहीं है, हम ईमानदार नहीं है। और जब तक हम ईमानदार नहीं होते तब तक जीवन भर कंफ्यूज ही रहेंगे। हम दुनिया के किसी कोने में क्यों ना रह रहे हो, और कितनी भी डिग्रीज हमने क्यों ना हासिल कर ली हो, और कितना भी बड़ा ओहदा, बड़ी पोस्ट हमें क्यों ना मिल गई हो, और कितने भी सारे पैसे हमने क्यों नहीं इकट्ठे कर लिए हो, लेकिन अगर हम ईमानदार नहीं है तो एक नियम निश्चित है कि जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है वो आदमी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ही, वो परेशान ही रहेगा और कंफ्यूज ही रहेगा। If we are confused, if we are complicated, it means we are not honest within ourselves. Within ourselves. अब आप कहोगे लो जैनिज्म में ये बात तो कभी हमने सुनी नहीं, ईमानदार होने वाली बात। यहाँ तो ये सिखाया जाता है अहिंसा को पालो, संयम को पालो, व्रत नियम को पालो। लेकिन ये सारी बातें, अहिंसा, संयम, व्रत नियम, ये सारी बातें ऑटोमेटिक लाइफ में आएगी अगर हमारे पास में ईमानदारी आ गई। तो समझदारी आई और ईमानदारी आई। और ईमानदारी का मतलब क्या है कि हम जो जीने के लिए हैं, हम सब डिफरेंट है। ऐसे सब एक है लेकिन वैसे सब डिफरेंट है, सब यूनिक है। तो हम सब जो जीने के लिए जीवन में यहाँ पर है, हम उसके अपने जीवन के प्रवाह के विरुद्ध ना जाएं। हम अपने जीवन के प्रवाह को समझने वाले बने, और जैसे भीतर हो वैसे बाहर बनने लगे। तो पता क्या होगा, सारी जो पूरे समाज में जो हिपोक्रेसी होती है, जो पाखंड पैदा होता है, हम उस पाखंड के पिंजरे से मुक्त हो जाएंगे। That is the way of liberation. ईमानदार होते ही हम पाखंड की दुनिया से बाहर हो गए। This is the way of liberation. लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये लिबरेशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बेईमान होने में क्या मजा और ईमानदार होने में क्या सजा लगती है? ये क्वेश्चन है जिस पर हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए कि हम सबको क्यों ईमानदार होने में बहुत मुश्किल लगती है, बेईमान होना बहुत इजी क्यों लगता है। पता है, जैसे हम बेईमान होते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि हमारे इर्द गिर्द बेईमान लोग हैं, उन सब से हमें अप्रूवल मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का साथ मिल जाता है बेईमान होने में। जैसे आप किसी एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जहां आप चाहते हो कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूं, तो हो सकता है आपको बहुत अवरोध सहने पड़े, बहुत ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आए। तो आप क्या चाहोगे? कि प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहते, तो हम क्या चाहते हैं, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही हम कर लेंगे। अगर सब लोग झूठ बोल रहे हैं हम भी बोल रहेंगे, सब लोग रिश्वत ले रहे हैं हम भी ले लेंगे, सब लोग केक काम चोरी कर रहे हैं हम भी करेंगे। अच्छा, हम सब ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि तो भीड़ मिलती है, एक दूसरे का अप्रूवल मिलता है, एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है, और फिर हमें इसमें कोई भी रिस्क नहीं लगती है, इसलिए हम सब बेईमान होना चाहते हैं। लेकिन ईमानदार होने में पता क्या मजा है? हाँ, बहुत सारे पाखंडी लोगों की भीड़ छूट जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते, आप अपने आप में झूठे ही नहीं होते। आप बोलते हो जैसे मैं हूँ वैसे मैं रहूंगा, जो चीज मैंने बोली है मैं उसको करता हूँ, उसको जीता हूँ, मतलब मैं जीवन को सत्य से जीता हूँ, अपने आपको प्रमाण रख के जीता हूँ, किसी और की नजरों का प्रमाण नहीं चाहिए, मैं अपने आप को प्रमाण बना के खुद जीता हूँ। तो इस ईमानदारी में कितना मजा होगा कि अब आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे और आपके भीतर में एक हल्कापन आएगा। जितने हम लाइट होंगे उतना हम एनलाइटनमेंट की और आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर हम लाइट ही नहीं है, हम हल्के ही नहीं है, हम भारी बने हुए हैं, हम लगातार सोच रहे किसको क्या दिखाना, किसको क्या बताना, किससे क्या छुपाना, कहाँ पे क्या शो करना चाहिए, कहाँ पे क्या हाइड करना चाहिए। अगर हम इस तरह से हाइड एंड सीक में, शो एंड हाइड में चल रहे हैं, तो हम लोग ईमानदार नहीं है, और ईमानदार नहीं है यानी हम जैन नहीं है। अब बड़ी उल्टी बात मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जैन समाज है और मैं तो इतने सालों से जैन समाज के परिचय में रह रही हूँ, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग भी जो बहुत क्रियाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां भी बात आती है ईमानदारी की, बेईमानी की, वहां पता नहीं क्यों एकदम से बेईमान हो जाते हैं। एकदम से उनका चेहरा धर्म के स्थान पे कुछ और हो जाता है, घर पे कुछ और हो जाता है, सोसाइटी में बैठते कुछ और हो जाता है, फ्रेंड्स के बीच में कुछ और हो जाता है, फैमिली के बीच में कुछ और हो जाता है। जल्दी से बातें पलट देते हैं। और ये बातें पलटने की आदत उन्होंने कहाँ से सीखी? अपने एटमॉस्फेयर से सीखी। और ये सारी बातें क्यों चल रही है? क्योंकि हम लोगों के बीच में क्लैरिटी नहीं होती। हमारे भीतर प्रश्न है, हम अपने बड़ों से प्रश्न नहीं कर सकते। हमारे भीतर कोई लॉजिक्स उठ रहे हैं, हम उस लॉजिक्स को किसी के सामने रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछना गुनाह करना है। हमें सिखा दिया गया धर्म पे आस्था कर लो, जो बड़े लोगों ने कहा उसको चुपचाप मान लो, सवाल मत उठाओ, क्योंकि अगर तुम सवाल उठाते हो तो तुम गड़बड़ी पैदा करोगे। और जहाँ सवाल नहीं उठाया जाएगा वहां क्लैरिटी नहीं आएगी, जहाँ क्लैरिटी नहीं आएगी वहां पर आदमी में ईमानदारी कहाँ से आएगी? वो कंफ्यूज ही रहेगा। और इस तरह से चारों ओर कंफ्यूज लोगों का जाल बिछा हुआ होता है। और फिर ये कंफ्यूज लोग पता है क्या करते हैं? जब भी मिलते हैं एक दूसरे की तारीफ करते हैं, और जैसे ही उनसे दूर हो जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। और ऐसे ही चारों ओर हो रहा है। अगर हम आंख खोल के देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा जाल क्या है। लोग खुद ही जाल बुन रहे हैं, खुद ही उस जाल में फंस रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में किसी तरह के जाल में क्यों ना फंस रहे हो। जाल सब जगह के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी ट्रैप्स, और हम सब किसी न किसी तरह की ट्रैप में है। अगर हमें दिखलाई पड़ने लग जाए तो हमें समझ में आ जाएगा हमें पाखंडी नहीं बनना, हिपोक्रेट्स नहीं बनना। हम जैसे भीतर वैसे बाहर हो जाए, और उसके लिए क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी के लिए नॉलेज चाहिए। इसीलिए फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, एंड द सेकंड थिंग कि जब नॉलेज होगी तो क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी तो आदमी ऑनेस्ट होगा, क्योंकि उसमें प्योरिटी आएगी। प्योरिटी आने का मतलब ऑनेस्टी आएगी, एंड दैट ऑनेस्टी इज टू बी अ रियल जेन। द वे टू बी अ रियल जेन इज टू बी ऑनेस्ट। ये दिखने में बहुत सरल सी बात लग रही है, लेकिन मैं जानती हूँ अप्लाई करना आसान नहीं। अब अप्लाई करने के लिए तो एक आदमी को खुद ही संकल्प लेना होगा कि हाँ मैं इसको अप्लाई करूंगा। मैं किसी भी जगह क्यों ना हूँ, किसी भी फील्ड में क्यों ना हूँ, मैं भीतर जो उठ रहा है वैसा बाहर करूंगा। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपके बॉस ने आज आपसे पूछा कि भाई आपने जो काम करके दिया, आज वो क्वालिटी इतनी मजेदार नहीं लगी जितनी आप हमेशा करते रहे हो, तो ऐसा क्यों? अब आपको आंसर देना है। अब आंसर को मैनिपुलेट भी कर सकते हो आप कि भाई आज एटमॉस्फेयर सही नहीं था, आज फला चीज ठीक नहीं थी, ये था वो था, किसी और पे जिम्मेदारी डाल सकते हो। और अगर आप ऑनेस्ट हो, आप कह सकते हो भाई मेरे भीतर में आज वैसा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मूड नहीं था, या मैं घर से झगड़ करके आया हूँ, आज मेरे को काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं था, मेरे भीतर ये डाउट आया था इस काम को लेकर के। आपके भीतर जो सिचुएशन आई है, आप उस सिचुएशन को एज इट इज बताते हो, इट मीन्स यू आर ऑनेस्ट। लेकिन आप अपनी सिचुएशंस को एज इट इज शो करने की बजाय किसी और पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हो, इट मीन्स वी आर नॉट ऑनेस्ट विद इन आवरसेल्फ।
अभी ऑनेस्टी only on business field, in your family field, in your social field, in your anywhere, say anywhere, खुद के साथ हम ऑनेस्ट है या नहीं. अगर देखो ऑनेस्ट होंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर ऑनेस्ट नहीं होते तो आदमी को कितना सोचना पड़ता है. जैसे आपने एक जगह झूठ बोला या झूठ बोलने के लिए सोचा कि मैं यहाँ पे झूठ बोलूंगा, तो उस झूठ बोलने के सोचने के साथ ही कितनी 100 स्टोरी हमारा माइंड बनाता है. सपोज टेक्स्ट चोरी करने का सोचा, अब टेक्स्ट चोरी करने का एक सोचा मात्र है, अब आपके माइंड ने देखो काम करना चालू कर दिया. यहाँ पे ये करना होगा, वहां पे वो करना होगा, वहां पे ऐसे दिखाना होगा, ऐसे शो करना होगा. अब कितनी सारी फाइल्स हमारे माइंड ने जनरेट करी क्योंकि हमने टेक्स्ट चोरी करने का सोचा है. हमने जरा सा बेईमान होने का सोचा, हमारे माइंड ने इतना कॉम्प्लिकेशंस जनरेट कर दिए. ये सब अब क्या होगा, हम कंफ्यूज हो गए, हम कॉम्प्लिकेटेड हो गए, हम स्ट्रेस में चले गए. और अब ये स्ट्रेस बाकी सारी बीमारियों को लेकर आएगा. जितनी भी बीमारियां, जितनी भी एलिमेंट्स है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, उन सब के गहराई में क्या है, कॉम्प्लिकेशंस. और कॉम्प्लिकेशंस क्यों है, क्योंकि हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है. ऑनेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है. और क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपनी समझदारी का उपयोग अपने आप की जिंदगी के मुद्दों पर कभी किया ही नहीं है. तो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, समझदारी हमारे में है, अपने आप पे उपयोग करें. द सेकंड, ईमानदारी हमारे में आ जाए, जिंदगी में मजा आएगा. एंड द थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट आए, तो तीसरा पॉइंट भी साथ आएगा जिसको आने से हम रियल जैन हो सकते हैं. वो क्या है, रियल जैन होने के लिए हमें एक बात समझना होगा कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्फ. नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्फ. हम जो भी है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं. दिस इज द थर्ड पॉइंट. इसको बोलते हैं जिम्मेदारी. फर्स्ट थिंग इज समझदारी, सेकंड इज ईमानदारी, एंड द थर्ड इज जिम्मेदारी. हम जिम्मेदारी लेना सीखे अपने आप की. अब हमारे यहाँ बड़ी गड़बड़ी क्या चल रही है, यूएसए में थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है, इंडिया में बहुत डिफरेंट है. यूएसए में तो ये चीज बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है लोगों को कि भाई हम खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने आप के लिए. तो यहाँ बच्चे भी अपनी जिंदगी को कैसे आकार देना है जल्दी से समझ लेते हैं. इंडिया में तो सालों सालों तक, युगों युगों तक एक ही बात चलती रहती है कि मेरे लिए कोई और जिम्मेदार है. चाहे वो तो परमात्मा जिम्मेदार है, चाहे तो पिछले जन्मों के कर्म जिम्मेदार है, चाहे तो हमारा सरकार जिम्मेदार है, चाहे तो हमारा समाज जिम्मेदार है, चाहे तो हमारा परिवार जिम्मेदार है. ये इंडिया में तो बहुत ज्यादा सोच है. यूएसए में एक मजेदार बात है, यहाँ लोग जल्दी से समझ जाते हैं कि भाई हम जो कुछ भी, उसकी जिम्मेदारी हमारी है. तो पता है वो लोग अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खुद बढ़ा पाते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सतत जागरूक रहते हैं. और ये बहुत अच्छी चीज है. इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि अगर क्रियाओं की तरफ ध्यान न दे करके आदमी के अपनी मौजूदा स्थिति की तरफ ध्यान दिया जाए, अगर हम मतलब रिचुअल्स को ना सोचे और रियल लाइफ के साथ में जोड़ करके देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यंगर जनरेशन और जो कमिंग जनरेशन है वो ज्यादा ईमानदार है और ज्यादा वो जैन होने के करीब है, बजाय हमारी ओल्ड जनरेशन की. ओल्ड जनरेशन रिचुअल्स तो बहुत करती है, लेकिन जहां तक उनकी जिंदगी की सवाल, जिंदगी से जुड़े हुए सवालों की तरफ हम निगाह डालें तो हमें समझ में आएगा कि वे अपने आप के साथ में इन क्वालिटीज के साथ डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो केवल कुछ क्रियाओं के साथ डेवलप हो रहे हैं. जैसे कि उन्होंने बहुत सालों से रात को खाना नहीं खाया होगा, बहुत सालों से जमीकन नहीं खाया होगा, बहुत सालों से चोरिया, लेकिन उन सब के बावजूद उनकी जिंदगी के अंदर हम देखते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस खत्म नहीं हुए. क्यों नहीं खत्म हुए? उनकी नजर अपने आप पर नहीं है, उनकी नजर सतत किस पर है, कुछ सिद्धांतों पर है, कुछ मान्यताओं पर है और कुछ दिखावे पर है, लेकिन अपने आप पर नहीं. तो यहाँ थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत इजी है. अगर हम ये समझ लें कि इस लाइफ में हम जो कुछ भी है उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल. हम जो बन रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, अगर सुखी है, अगर दुखी है, तो हम जिम्मेदार हैं. तो पता इस पॉइंट को हम किस तरह से समझे, इस पॉइंट को हम ऐसे समझे कि जैसे आपको एक BMW कार दे दी गई या मर्सिडीज दे दी गई या और कोई रोल्स रॉयस दे दी गई है, कोई अच्छे बढ़िया से बढ़िया कार दे दी गई है. अब आप उस कार के मालिक हो गए, कार की चाबी आपके हाथ में, कार आप ड्राइव कर रहे हो. आप कैसे कार ड्राइव करोगे? बढ़िया से बढ़िया कार आपको जो मिली, एकदम जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करो, पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करोगे कि मुझे बहुत महंगी कार गिफ्ट मिली है और मुझे ड्राइव करनी है इसको,
बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्राइव करोगे तो उसकी कैसे केयर करोगे, बड़े अच्छे से केयर करोगे। बस ऐसे ही समझना कि जो ये जीवन हमें मिला है, ये पूरे अस्तित्व का एक बहुत सुंदर सा छोटा सा अंश हमारे साथ है। ये शरीर है, ये जो कुछ समय है हमें मिला है, ये जो धरती पर इस सुंदर प्लेनेट पर रहने का एक मौका हमें मिला है, तो वो समझो एक बहुत सुंदर कार के से भी बढ़ करके इतना बड़ा गिफ्ट हमें मिला कि मनुष्य का जो शरीर है ना, ये भी एक सुंदर सी कार की तरह ही है, व्हीकल ही है जिसमें हम ड्राइव कर रहे हैं। तो मुझे इस शरीर के साथ, इस मन के साथ, इस पूरे वातावरण के साथ कैसे रहना है। जैसे मैं उस कार की केयर करूंगी, क्या मैं अपने आप की केयर नहीं करूंगी? जैसे मैं अपने पैसों की केयर करती हूँ, वैसे मैं क्या अपने इमोशंस की केयर नहीं करूंगी? लेकिन पैसे की केयर करना तो हमें सिखाया गया, पर अपने इमोशंस की केयर करना नहीं सिखाया है। हम अपने इमोशंस को मिसयूज करते रहते हैं, हम अपने थॉट्स का मिसयूज करते रहते हैं, हम अपने इंटेलेक्ट का मिसयूज करते रहते हैं, हम अपने टाइम का मिसयूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें समझ ही नहीं रहे हैं इसके लिए हमें मिला हुआ गिफ्ट है, या इसको समझो हमने अक्वायर्ड किया, बड़ी मुश्किलों से हमने इसको प्राप्त किया है, अब मैं इसकी कैसे केयर करूं? आई एम द रिस्पॉन्सिबल, और मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। आई हैव दैट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वेरी वेल। तो मैं क्यों ना करूं? अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो हम अपने आप का रिस्पेक्ट करेंगे, इस जीवन का रिस्पेक्ट करेंगे। और जो अपने आप में प्रेम पूर्ण रह सकता है, वो किसी और के साथ कभी बगैर प्रेम के नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही तो हमसे फैलेगा। अगर हमारे भीतर प्रेम होगा तो एटमॉस्फेयर में भी प्रेम फैलेगा। लेकिन यहाँ पे पहली प्रॉब्लम जो हम समझे अपने आप की लाइफ के साथ में, कि मोस्टली हम सारे लोग कंप्लेनिंग होते हैं, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। कोई नहीं देखता जो मिला है हमने उसके प्रति अपने क्या रिस्पॉन्ड किया। अगर हम अपने आप में प्रेम से हो जाते हैं, अपने आप में कॉम्प्लेक्स लेस हो जाते हैं, अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाते हैं, तो पता है क्या होगा? हमारे भीतर से जो प्रेम पैदा होगा, जो एक केयरिंग पैदा होगी, जो एक जागरूकता पैदा होगी, अब वो जागरूकता पूरे वातावरण में भी फैलेगी। और तब क्या होगा? जागरूक व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों में जो जागरूकता आती है, तो उससे पूरा माहौल इतना सुंदर बन जाता है। इसको ऐसे समझना कि घर में एक दीपक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, खुशबू फैल रही है, तो पूरा माहौल कैसा हो रहा है? ऐसे ही जिसके भीतर दीपक जल रहा है, उसकी जिंदगी प्रकाशित होने लगेगी। एंड दैट प्रकाशित होना ही इस जीवन में आने पर अपनी जीवन की यात्रा को सही दिशा में ले जाना है। अगर हम भीतर से प्रकाशित होके जीते हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। और हर एक में एक क्वालिटी है ही, हर एक अपने आप में एनलाइटन होने के लिए यहाँ पर है और हो ही सकता है। और ऐसे समझो कि है ही, बस केवल इतनी ही अंतर है कि हमारी निगाह अपने आप पर नहीं है। एक थर्ड क्वालिटी जो हम अपने आप में अगर थोड़ी सी डेवलप करें, थोड़ा सा सजग हो जाए कि हमें जो मिला उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कैसे इसको बेस्ट वे में रिस्पॉन्ड करें। हम जो है उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल है, तो हम अपने आप को कैसा हो जाए, कैसे हो जाए, कैसे बने, कैसे जिए। अब कैसे जिए वर्ड जब आएगा तो उस कैसे जिए में सारी चीजें आ गई, ऑल कोड ऑफ कंडक्ट्स आ गए। अब जितने भी कंडक्ट्स की बातें हम करते हैं, आचरण की बातें करते हैं, चारित्र की बातें करते हैं, संयम की बातें करते हैं, वो सारी बातें इसलिए नहीं करनी है कि इससे हमें कोई स्वर्ग मिलेगा या कर्म कटेंगे या मोक्ष मिलेगा, बल्कि ये सारी चीजें हमारी अपनी समझ से हमारे में डेवलप होगी कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसको बेस्ट वे से कैसे रिस्पॉन्ड करूं, बेस्ट वे से कैसे लूं इसको, तो कितना मजा होगा। तो हमारा कहना यह है कि धर्म की कोई बात जब तक बाहर से ऊपर थोपी जाएगी तब तक वो सही नहीं होगी। जब तक हम ऊपर से कुछ चीज को ओढ़ रहे हैं तब तक वो चीजें छूटी जाएगी, आज छूटे कल छूटे, छूटेगी छूटेगी। लेकिन जब कोई चीज हमारे अनुभव से हमारे जीवन में आती है, हमारी समझदारी से आती है, तब उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारे एक्सपीरियंस के साथ जब हम ग्रो करते हैं तो वो हमारी जो ग्रोइंग है, वो जो हमारी जिंदगी के अंदर एक फ्लावरिंग होती है, वो फ्लावरिंग मजेदार होती है।
वो हमें रियल मी बनाती है, असली आत्म स्वरूप को हम जानने लगते हैं। और नहीं तो क्या होता है, हम बातें तो करते हैं कि हम आत्मा है, हम परमात्मा है, लेकिन हमारा कोई अनुभव नहीं होता, और तो ये सारी बातें खोखली हो जाती है। तो जैनिज्म को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें सिद्धांतों में उलझने की बजाय केवल छोटी छोटी शब्दों को मैं बात कर रही हूँ, इन 4 क्वालिटीज के साथ में कैसे सतत खुद को डेवलप करते जाना है। हम डेवलप होते गए तो हम जैन होने जैसी एक योग्यता पा लेंगे, एक पोस्ट पे आएंगे कि हाँ, नाउ वी आर रियल जैन। और यहाँ जैन होने का मतलब किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं है और किसी रिचुअल से रिलेटेड नहीं है, ये है अपने आप के साथ में कैसे हम प्रकाशित होकर जिंदगी जिए, खुद के प्रकाश से जिए, वो होना रियल जैन होता है। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट समझदारी, एंड द सेकंड पॉइंट जो हमने बात की वो ईमानदारी, एंड द थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करें। यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं हम चाहे तो, कि अब तक हम सब ने बहुत सारी दूसरों की जिम्मेदारियां ओढ़ी है, और पूरी जिंदगी हम इसी में लगे रहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसके लिए, लेकिन हम खुद के लिए कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं बने। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सबसे पहली आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद के प्रति है। हम खुद को प्रेमपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, आनंदपूर्ण रखना सीखे, तभी वो चीजें फैलती हुई पूरी दुनिया में फैलेगी, हमारे चारों ओर फैलेगी। जैसे फूल अगर सही दिशा में आया है, फूल अगर खुशबू के साथ प्रफुल्लित हुआ है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलेगी। ऐसे ही चौथा पॉइंट हमारी जिंदगी में आएगा, वो क्या है कि जिसके अंदर समझदारी आई, जिसके अंदर ईमानदारी आई, जिम्मेदारी आई, उसने अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीख लिया है। अब फोर्थ पॉइंट आएगा कि अब जीवन में कैसे भी संघर्ष आ जाए वो आदमी डरेगा नहीं, उसके अंदर बहादुरी आएगी। जैन होने का मतलब बहादुर होना है, टू बी करेजियस। लेकिन हम लोग देखते हैं अक्सर जैन लोग डरपोक नजर आते हैं, उनके चेहरे पर भी बिल्कुल भी विश्वास नजर नहीं आता कि नहीं वो मस्त है, वो स्वस्थ है, वो अपने आप में करेजियस है, वो नई चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए तत्पर है। अगर ऐसे नहीं है तो हम जैन नहीं हो सकते। जैन होने का मतलब मैं फिर से कहना चाहूंगी, जो चली आ रही रिवाजों के साथ हम जैन को जोड़ रहे हैं, मैं उस जैन की बात नहीं कर रही, मैं उस जैन की बात कर रही हूँ जो असली अर्थों में जैनत्व को जी रहा है, रिवाजों से नहीं। और ये यूएसए में मजेदार बात है कि वहाँ कस्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसा अभी भी सोचते हैं जैन यानी किचन रिलीजन, जैन यानी ये खाना ये नहीं खाना, जैन यानी ये करना नहीं करना। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जैन होने के नाम पर जितनी बातें प्रचारित की गई है, ये सारी बातें उन लोगों ने कही होगी जिन्होंने असली अर्थों में जैन होने का अभी अनुभव नहीं किया है। क्योंकि महावीर की अहिंसा कभी अदर ओरिएंटेड थी नहीं कि ये खाओ मत खाओ, इसमें जीव है उसमें जीव नहीं है, ये सब बात में चलाई गई बातें हैं। उनका एक ही बात था, जिसने अपने लाइट, अपने भीतर की लाइट जगा ली ना, अब उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। जिसके भीतर लाइट आ गई और वो खुद ही अपनी आंखों से देख लेगा, अपने विवेक से समझ लेगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। उसको किसी और के द्वारा दिए गए, थोपे गए किसी भी आचरण के सिद्धांत के नियमों की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी ज्ञानी पुरुष ने, किसी भी तीर्थंकर ने कभी भी आचार शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। आचार का ज्ञान दिया आचार्य ने, और आचार्य का काम था कि वो जिन लोगों पे काम कर रहा है, जिस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम कर रहा है, वो उनको इंटरेक्ट करते हुए उनको कैसे उनकी यात्रा में सहयोग दे सके, उनके लिए वो कुछ नियम लिखता है, उनके लिए कुछ बातें बताता है। तो ये बात हो गई थी बिल्कुल एक गुरुकुल की तरफ। लेकिन हमने उन सब चीजों को इतना कॉमन बना दिया कि जो उस गुरुकुल में है या नहीं है, हमें लगता है सबको इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ गड़बड़ी हो गई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं चाहूंगी जब इंटरेक्टिव सेशन होगा, लोग सवाल करेंगे, तब हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन चौथा पॉइंट पहले हमें पूरा कर लूं, वो है बहादुरी। जैन होने का मतलब बहादुर होना है, डरपोक होना नहीं है, कायर होना नहीं है। और बहादुर होने का मतलब है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए,
मैं अपनी समझदारी, ईमानदारी और जवाबदारी से हटूंगा नहीं। अगर जो अपनी 3 क्वालिटीज के साथ सतत ग्रो कर रहा है, दैट इज रियल बहादुर। अब इन चारों शब्दों को मैं वापस एक बार बोलना चाहूंगी। ये चारों शब्द के साथ अगर हम थोड़ा सा समझ लें, तो समझदारी मतलब ज्ञान, ईमानदारी मतलब दर्शन, जिम्मेदारी मतलब चारित्र और बहादुरी मतलब तपस्या। तब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये 3 ज्वेल, 3 रत्न जो है वही हमारे जीवन में है, सबके जीवन में है। बस उनको अगर हम राइट डायरेक्शन में यूज कर सके तो यही मार्ग मुक्ति का मार्ग है। एंड दैट इज द रियल वे टू बी जैन। जैन होने का सही तरीका या जैनिज्म को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? समझदारी मतलब सम्यक ज्ञान, ईमानदारी मतलब सम्यक दर्शन, जिम्मेदारी मतलब सम्यक चारित्र और बहादुरी मतलब सम्यक तप। ये चारों गुण हमारे जीवन में हम सतत बढ़ाते जाएं, सतत जागरूक होके जीते जाएं, सतत जानकार बनते हुए जीते जाएं, तो वो ही चारों गुण हमें सतत लिबरेट करेंगे। अब प्रश्न है, किससे लिबरेट करेंगे? हमारे अपनी कंडीशनड सेल्फ से हमको लिबरेट करेंगे। हमारी अपनी पुरानी सोच से, खोल से, मान्यताओं से हमें मुक्त करेंगे। और तब क्या होगा? हमारे अंदर सारा अंधेरा नहीं रहेगा, हम लाइट होंगे और इनलाइट होंगे। लाइट होना ये सिम्टम हमें बता रहा है कि हम राइट वे पर है, राइट पाथ पर है। और इनलाइट होना ये बता रहा है कि नाउ वी आर, मतलब वी आर लीडिंग आवर लाइफ टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। और तो मजेदार जिंदगी हो जाएगी। आनंद से हम जिए, आनंद ही हमारा लक्ष्य है। और उस आनंद को सतत बनाने के लिए हमें अपने आप को डेवलप करने की आवश्यकता है। और उस डेवलपमेंट के लिए हमें ये 4 क्वालिटीज को सतत अपने सामने रखना होगा। ये बात आपने सुनी है, लेकिन केवल सुनने से तो काम नहीं होगा, सुनने के साथ इसको बुनना भी होगा, भीतर उतारना होगा, बार बार सुनना होगा और अपने सामने रख करके जीना होगा कि क्या मैं चारों के साथ चल रहा हूँ। अगर चारों के साथ चल रहा हूँ तो एक लक्षण होगा कि हमारे अंदर हल्कापन और खुशी पैदा होगी, आनंद पैदा होगा। और बस वही हमें अपनी राइट दिशा में लेकर के जाएगा। ऐसा लग रहा है कि समय मेरे को जितना समय दिया गया उतना पूरा हो गया है। अब मैं अपनी बात को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ और चाहूंगी कि आप में से किसी के भीतर कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, आप जरूर पूछिए। आप इस पब्लिक डोमेन पे भी पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे मेल भी कर सकते हैं, और आनंद जी को प्रश्न भेज करके मेरे पास तक प्रश्न आ जाएगा, कैसे भी भेज सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हो। जय हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सेशन रहा। इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू फॉलो। Thank you so much for very simple, very easy to understand, but in I think my opinion, very profound principles, right, that everybody can apply in their day-to-day life. So I know we have a lot of visitors also dial into WebEx today because we have shared the details of this meeting with a lot of other groups to to get maximum advantage of your knowledge. Maybe we can spend a few minutes if anyone have any quick questions. आप आपका अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं वैभवश्री जी को। अगर आपको माइक अनम्यूट करके बोलने में दिक्कत है तो यू आर वेलकम टू टाइप इट इन द चैट एंड आई विल बी हैप्पी टू read it to her. Hello, Vaibhashriji. Can you hear me? Yes, I can. Okay, thank you. First of all, this has been a profound has brought profound change in my life since I'm listening to your lectures, and thank you making it so easier for us to understand. So thank you for your discourse, and I will be listening to some more. My question is, you said that the self-realization will come as you study your own self. Yes. So
वैभव जी, ये क्या होता है यहाँ कि everybody has a different understanding or self realization, or everybody has a different threshold. अगर मैं self realization करूँ तो मेरा self realization, oh, I am self realized and my Jainism will be this or that. तो उसमें कोई consistency नहीं रहेगी. Everybody has different understanding of a self realization. Everybody will have a different threshold. Everybody will have a different limits, and they will all will understand different from each other what Jainism really is. Any thoughts? बोलिए। I'm asking you, अगर सब everybody follows their own instinct into what Jainism is, आपने बताया सब everybody will realize this by themselves, कि कहाँ limit लगानी है, क्या क्या करना है. So Yes. सबकी पहचान will be different in a Jainism, कि क्या true Jainism है. So this is Yes. what we want, कि everybody will have different understanding of Jainism. देखिए, अगर कोई व्यक्ति अंडरस्टैंड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रियलाइजेशन के मोड पे जाएगा, और जो रियलाइज करता है वहां कभी भी डिफरेंस नहीं होते हैं. डिफरेंस होते हैं केवल हमारे एक्सप्रेशंस में. मतलब हमने जो एक्सपीरियंस किया है वहां आप एक्सपीरियंस करो, मैं करूँ, कोई और करे, कोई किसी भी देश में बैठ करके करे, किसी भी एज में बैठ के करे. अगर किसने सेल्फ रियलाइज किया है, देयर इज नो डिफरेंसेस. मतलब जो महावीर को अनुभव हुआ वही ऋषभ देव को अनुभव हुआ, वही संभवनाथ जी को अनुभव हुआ, वही पारसनाथ जी को अनुभव हुआ. अनुभव में कभी कोई फर्क नहीं होता है. लेकिन आपका प्रश्न है कि जैनिज्म को कोई अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करता है. बात जैनिज्म की नहीं है. जैनिज्म तो एक पाथ है, एक वे है जिससे हम अपने आप को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उसके लिए उन लोगों ने जिन्होंने जान लिया है उन्होंने कुछ बातें बताई है, तो वो बातें हमारे लिए गाइड की तरह है. लेकिन हमको उस गाइड को लेकर के पकड़ के नहीं बैठना है. उस गाइड को लेकर हमें खुद को अपनी जर्नी करनी है. हम में से हर व्यक्ति को अपनी जर्नी करनी होगी. इसके लिए हमें गाइडेंस के लिए इन तीर्थंकरों की, इन ज्ञानी पुरुषों की जो वाणी मिली है वो गाइड के लिए मिली है. अब उस वाणी को किसने किस लेवल पे समझा है वो डिफरेंट बात है. लेकिन समझने से ज्यादा जरूरी क्या है कि आपने जितना भी समझा है उसको आप अप्लाई करो. जब अप्लीकेशन होगी तो रिजल्ट आएगा. अभी क्या हो रहा है हमारे पूरे जैन समाज में, हर व्यक्ति ने बहुत प्रवचन सुन लिए, बहुत प्रवचन दे लिए, लेकिन प्रवचन ही प्रवचन हो गए, कोई अप्लाई नहीं कर रहा है. जब अप्लाई करेगा और अपने रियल सेल्फ के साथ ईमानदारी से अगर ग्रो करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो किसी एक पॉइंट तक पहुंचेगा. और उसका एक्सपीरियंस तक चला जाता है तो उसके बाद में उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा. जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक सारे डिफरेंसेस है. फिर से समझना, सम्यक दर्शन यानी आत्मानुभव, उसमें कोई भेद नहीं होता. लेकिन ज्ञान यानी एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशंस जो है, अभिव्यक्ति जो है वो सबकी अलग अलग ही होती है, जुदा जुदा ही होती है. तो अभिव्यक्ति में कोई किसी तरीके से बोल रहा होगा, कोई किसी तरीके से, उस पर कभी मत जाओ. इस बात पे जाओ कि किसी की भी कोई भी एक्सप्रेशन से आपके भीतर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई. जैसे आपने किसी को सुना और सुनकर के आपके भीतर कोई समझ आई, अब उस समझ को अप्लाई करो. जैसी एप्लीकेशन आएगी आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा. आपकी जिंदगी के अंदर कुछ हल्के होगे और फिर लाइटेड होते जाओगे. अब आपको अनुभव हो गया तो बाकी सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाए. लेकिन अगर खाली बौद्धिक रूप पे अटक के रह गए, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा माने कि वैसा माने, तो इन डिफरेंसेस का तो जन्मों जन्मों तक भी कभी समाप्ति होने वाली नहीं है. ओके, गॉट इट. Thank you so much. This is a really new direction. First time I seen Samyak Gnan, Samyak Darshan, Samyak Charitra. Have you aligned with Baduri or all these different concepts? Thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you, Pankesh. We can take probably one more question if anyone wants to ask. And as she reminded, if you're camera shy or maybe you have not internalized all the thoughts yet, if you have any questions, you can relay those to me in the future. I had one question, Anand Bhai. So yeah, go for it. I thank you so much, Vaibhashji. It was very. I'm not a native Hindi speaker, but it was still. I was still able to understand you. So thank you for that.
My question was about the niyams. I understand that जो लोग blindly niyam follow करते हैं, that may not be the right thing to do. लेकिन अगर अनुभव होने के बाद और जानने के बाद जो नियम पालते हैं, that is probably the right thing to do, right? I mean, as long as they're not forcing it on others, and maybe by seeing those people, others might also follow. I don't necessarily think that applying niyams is a bad thing. So, what do you think about that? देखो, जो लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं किसी भी नियम को, मोस्टली उनके पास कुछ कुछ बिलीफ सिस्टम्स है और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि उन बिलीफ सिस्टम्स की वजह से ही वे कभी भी मुक्त नहीं हो पा रहे, हमेशा बाउंड्रीज फील करेंगे अपने भीतर भी बाहर भी। और जब हम मुक्ति के पथ पे जा रहे हैं तो बंधन में बढ़ते जाएंगे तो मुक्त कैसे होंगे? तो जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उनको जरूरत है कि वो कंटेम्पलेट करें, वो आत्मचिंतन करें कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे भीतर से आ रहा है, मेरी अपनी अनुभव या समझ से आ रहा है, या मैं किसी के प्रभाव में आके कर रहा हूँ। और नियम ये कि जो भी क्रिया हम किसी के प्रभाव में आके करेंगे, हम उसके अपोजिट पोल पे वापस जाएंगे ही जाएंगे। तो उन लोगों की लाइफ में हम भी देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आपके चारों ओर भी होंगे, मेरे चारों ओर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जिन्होंने कोई भी क्रिया को कभी किसी प्रभाव में आके किया है, वो बाद में उसके अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। खैर, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने अपने अनुभव के बाद उनके भीतर कोई नियम आया है तो वो उनका स्वभाव है, अब वो नियम उनका विवेक है, वो नियम नहीं है। विवेक और नियम में फर्क है। विवेक का मतलब है अपने लाइट में चलना, और नियम का मतलब है किसी और के द्वारा दिया गया या खुद ने ही ओढ़ा गया, खुद ने ही ग्रहण किया गया किसी एक पर्टिकुलर क्रिया में जाना। अब पर्टिकुलर क्रिया में जाना तब तक गलत नहीं है जब तक कि आप खुद को डेवलप करने के लिए खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। हमको खुद को डेवलप करने के लिए, खुद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे नियम खुद से लेने होते हैं। अगर हम लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं इसके अंदर में, लेकिन वो हमारे अंदर से आने चाहिए। सवाल इतने वो हमारे भीतर से आने चाहिए, तो बड़े मजेदार होते हैं। जैसे मैं इसको कई बार इस एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जिस व्यक्ति को लगता है मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मेरा ये फाइनल ग्रुप है, एग्जाम्स है और एग्जाम्स के लिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, अब उसके भीतर से आते हैं कि मुझे तैयारी के लिए करना है तो मुझे मूवीज देखने नहीं जाना है, मुझे मटर गश्ती नहीं करनी है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करनी है। वो सारी चीजों को बंद करके अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाता है। अभी उसके भीतर से आया ना, अब उसे यूं तो उसकी मम्मी बोले चैटिंग बंद कर तो वो नहीं करेगा, लेकिन अब उसको समझ आएगा मेरे को एग्जाम के लिए तैयारी करना है, वो खुद ही कर रहा है। दैट इज गुड। अब वो नियम भी तो उसने अपने से लिया है, लेकिन उसने क्यों लिया, उसके पास रीजन क्लियर है, और अब वो अपने नियम के साथ ऑनेस्ट है क्योंकि उसने भीतर से आया है नियम। ऐसे कोई नियम आ रहा है तो मजेदार बात है, लेकिन कोई हमें ऊपर से दे रहा है या कोई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो हम सब बिलीफ सिस्टम में जा रहे हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। एक पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, जो अनुभव के बाद में जीता है कोई आदमी, वो नियम नहीं है, वो तो उसका विवेक है, वो उसका मौज भी है, उसकी मौज है, उसको खाए ना खाए, जैसे महावीर की मौज है, अब खाए ना खाए, बोले ना बोले, चले ना चले, उनकी मौज है। तो किसी की मौज से कुछ होता है तो वो कोई नियम नहीं है। अब उससे कोई प्रभावित होता है नहीं होता है, तो सामने वाले की अपनी दशा है, कौन किसका क्या प्रभाव लेता है, उसके ऊपर तो कोई दूसरा का कोई वश नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे महावीर जैसे बुद्ध पुरुषों के पास रह के भी कोई लोग खाली उनके आचरण को देखते हैं और कोई लोग उनके भीतर की चेतना से जुड़ते हैं। और मैं ये कहूंगी यहाँ पे अपने अनुभव के साथ में कि कभी गुरुओं के भी या किसी भी ज्ञानी पुरुषों के हम बाहरी क्रियाकलापों को देख के अटक जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बड़े लीलाधर होते हैं। उनकी मौज को देखो कि वो सदा आनंदित रहते हैं, उनको कोई स्ट्रेस में नहीं डाल सकता है। वो जो कभी स्ट्रेस में नहीं जा सकते, वे मौजी लोग, वो जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी आत्मा को प्रणाम है। और उनकी मौज की जैसी हम सबके भीतर भी मौज है, वो प्रकट हो सकती है अगर हम डूज और डोंट्स की बातों में अटके नहीं तो। ओके, Thank you. जय हो। Okay, I think we'll bring this Q&A to conclusion now. Thank you once again, from the bottom of my heart, on behalf of the entire community. आप हमारे बीच आए, even though it's quite late in India. Thank you for spending some time with us. For those again, who might be new to Vaibhav Shri Ji, we have a weekly Sunday Swadhyay.
that we send out communications. So just look forward to those emails. If you would like to join, we have been discussing Uttaradhayan Sutra during those Sunday Swadhyayas. So the next session will be obviously tonight, and then every Sunday we have it. So if you are on the Jain Study Center mailing list, you definitely will get all the regular emails. Now I realize that we have a number of guests, as I mentioned at the beginning of the meeting. So we will spend a few minutes now with a few administrative announcements, because this is also a monthly meeting for the local Raleigh Jain community. So everybody is welcome to stay for as long as they want to. But if anyone wants to drop off, I'll give everyone about a minute or so to drop off, and then we will shift. Thank you, Anushaji, for inviting us. And now, कल सुबह मेरे यहाँ तो 6:30 होगा इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, तो सुबह 6:30 में वापस उत्तराधर सूत्र के साथ हम बातचीत करेंगे, मिलते हैं। जय हो। Thank you. जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। Okay, we'll wait a few more seconds as people drop off, and then I have a few announcements to go through. Sorry, we will run a little bit late today, but we were blessed to have two excellent speakers today. So I felt like going a little bit over is fine. At this time, I'd like to invite Meenal Shah. She's our treasurer, and Meenal is going to present our annual report for 2021, the treasurer's report. So over to you, Meenal. Thank you, Anand. Are you able to see my screen? Yes, if you want to go into presentation mode. Yeah. There you go. Okay. Thank you, everyone. I'm Meenal Shah. I'm treasurer for our JSCNC for 2021 and 2022. And I have just few slides to share with you. The most important one is the summary for year 2021. So first, I want to start with my sincere thank you and appreciation to Badal Bhai for helping throughout the process and the audit. Badal Bhai has spent so much time on the audit and explaining me everything. So I am really grateful for Badal Bhai. So thank you. COVID Relief Fund, we have collected about 24,000 last year for COVID Relief Fund, and we have distributed to our designated institutes, Seva, and then also to YJ and Vatsal Nidhi also. And Mahavir Jayanti 2021 was successful online also. Camp and picnic was also done last year. Richmond Jatra, that was the very first time we did it, and it was success as well. And Anand Bhai has already mentioned all this in great detail, so I'm not going in very detail. But that's where our most expenses and our donations was received. So that's why I'm bringing that up here. Next slide. This is about our summary from January 2021 to December 31st, 2021. I know the slide is small, so I have created the table on the side. It says general fund, the amount, and all the information related to it. So, and also if you want to go in more detail, just let me know and I can provide you all the documents, whatever fund or, how we have received the donation and all that is in a separate detail. So I don't think I will go over that detail here. Any questions so far? I was going to add, if any of the JSCNC members would like a copy of the report, feel free to reach out to me now,
and she would be happy to get you a copy. In the past, we used to bring printouts and hand it over when we used to, meet in person, but obviously in a virtual setting, that won't be possible. Yes, that is great point. Thank you, Anand. Yeah, I can send it via PDF if they want to. Sorry. Okay, so with that, we have a few upcoming events and donation opportunities as well. So for Mahavir Jayanti 2022, our date is April 30th, and it's going to be in person. And we already have received few donations and pledges. So if you're interested in donating towards Mahavir Jayanti or, Scholars Fund or any Jivdaya Fund, please let me know. The best way to send the donation is send it to my home address. It's listed here and it's also listed on website. And one request I have, when you send the donation, if you can just put the specific information, like where you want to send the donation, Pachara Fund or Jivdaya, that would be very helpful. So that's all I have. Just want to say sincere thank you to JSCNC family and Jain. Thank you, Meenal. So looks like the state of our union is pretty strong, as I can tell from this initial audit report. Let me ask Badal Bhai, our independent auditor for this year, if you have anything you would like to add. Thank you, Jai. No, I mean, Meena, you're doing a great job. And just as I said, I'm part of the center for a long, long time. But every year, even I just realized that even if we are a small center, we do lots of activities. And when there are more activities, definitely money is tied to it. But I really appreciate all the support that we get from the members and non-members for the executive committee to carry on any projects or any activities like the one we did at Jatra, which was a really highlight, and also the big relief activity for COVID, which was a very big amount, and the executive committee handled it very well. So my compliments to you, and especially Minard, you're doing a great job. That's all. Thank you. Anand Bhai, I had a question. Yes. Just wanted to know that the Jivdaya Fund, I hope it is used every year and not saved as part of, I don't know, what do you call it? It would be nice if the Jivdaya Fund is donated or sent to wherever we are supposed to. How does that work? Yeah, so typically we work with Jaina each year, and try to utilize the specific categories based upon how what like global initiatives they'll typically have. So happy to get you details offline, Kevin. Okay. All right. Okay. Thank you. All right. Yeah. Okay. So thank you, Meenal and Badal Bhai. Again, appreciate your efforts on this. And the next announcement I have is from Purvi. Purvi, are you with us? I'm here. Go ahead and share the Jain mentorship program details with the community, please. Sure. So this is the second year that we are doing this mentoring program through JSCNC. Last year, we had a small group of people who volunteered to be mentors, and we matched them up with mentees, either youth that live in this community or are new to the community, college students who wanted mentors, basically based on either their professional interests or extracurricular interests. So we already have some people who have signed up to be mentees for this year, and mainly looking for mentors now, some new mentors, because the ones from last year are still working with their mentees from previous year. I know specifically I'm looking for someone who is a physician to
meet with the mentee. But basically, the way the program works, I'm asking for the mentors and mentees to meet at least once per quarter. It doesn't have to be an actual physical meeting. It could be a virtual meeting. And basically to guide them in applying Jain values and a lot of what Weber Sriji talked about today. So Samajhdari, Imandari, Jimandari, and Baduri, right? Applying those concepts in their everyday lives. Of course, they're not living lives as sadhus and sadhvis, but how can they apply those concepts to life here, right? Either in college or in their young professional lives. So I hope people sign up. And I know on the form it says if you have attended college in the U.S., but actually is open to anyone who has experience, living here and encountering peer pressure, or even if you yourself haven't, if you have had your children go through that, and then be able to overcome and still stick to imandari, who they actually are, and apply Jain values. So I would appreciate if we have some more people volunteering for that. So thank you. Thank you. And I was just going to add, like, this is a brand new initiative, that we launched, and Purvi has had great success so far. And it's a great idea. She's been able to, kind of talk to other professionals from both YJA and YJP to step up and help out. So anyone who is interested, please reach out to her, and she can get you more details. The next person I'd like to invite is Paresh Bhai Gondalia. So as everybody know, this year we're gonna have in-person Mahavir Jayanti, but because of the timing and everything, and the guideline for the number of people we can have, we're gonna only have the puja. We won't have the cultural program, and then we'll obviously have the Swami Vatsalya after that. So let me ask Paresh Bhai to share with us the program details and anything else he would like to add. Thank you, Anand. Jai Jinendra, everyone. So again, as I mentioned, we'll be celebrating Mahavir Jayanti in person, which I'm looking forward to, and I'm sure you all are also looking forward to it. Since we have more time this year, we plan to perform Snatra Puja. As you know, Snatra Puja is ritual related to the birth of Tirthankara. We will start by remembering respectfully worshipping the virtues, attributes, and characteristics that allows the 24 Tirthankars to attain salvation. Then celebration of the birth and reenactment of the Tirthankar's first bathing ceremony, symbolizing Indra doing Abhishek on Tirthankara on Mount Meru after birth of Tirthankara. And then we'll follow that by Asprakari Puja, Swapna Darshan, Shanti Kalash, Arti Mangal Devo, and then I end with the Bhav Puja, which is Chait Vandan. Again, as we had done in past, we will have young adults and children performing puja and recitals under the guidance of Praveen Bhai and Arvind Bhai. Sweta will be coordinating assignments for the children and puja and speaking part. And then, of course, we'll need volunteers. So we'll be reaching out to the community for that. And then again, we are looking forward to having this successful event. And in order to achieve that, we'll need active participation from everyone. So again, looking forward to that. And then I'll let Sweta add some more detail on the upcoming registration deadlines and all that. So Sweta, if you go ahead. Thank you, Paresh Bhai. Jai Jinendra, everyone. And my name is Shweta, and I'm the Puja Coordinator for Mahavir Jayanti Puja this year. Right now, we have registration going on. And so far, we have 40 kids registered, and we're looking forward for more participation. The Ashtaprakari Puja, Swapna Darshan,
is done by our youth. And as Paresh Bhai added, we are going to do Snatra Puja this year as well. But I'm looking forward for more kids to participate in the Ashtaprakari Puja and Swapna Darshan. And of course, our high schoolers have the privilege to do the Shanti Kalash, the seniors. So please do register your child if you haven't already. And thank you to everybody who has registered. And of course, we'll be reaching out for volunteer help. Thank you for great participation each year, and we're looking forward to a great Mahavijayanti Puja and a great Mahavijayanti celebration this year. Thank you so much, Paresh Bhai. Thank you. Over to you, Anand. Thank you. And of course, I know we had pushed out a couple of announcements for registration. So thank you for everyone. Oh, go ahead. And one more thing, Ketan will be sending out a reminder once again today for the registration, and registration ends on Thursday, March 24th. Thank you. Great. All right. Yeah. So as I was saying, thanks everyone who registered for all of these forms on time. I know it's extra registrations, but it really helps us manage, an event like this. As most of you know, Mahavijayanti is the largest event that we manage. Usually, it's like the biggest block of time anyone who is in the executive committee, and of course all the volunteers that will end up spending on. So thank you for all your timely registrations. If you have any questions, or if you forgot to register, or if you missed an announcement, reach out to Ketan Kurwa. He is our commander-in-chief for communications, so he'll be happy to get you signed up for anything you might have missed. And then as Meenal pointed out, this is, I think, after 2-year break now that we're meeting for an in-person event. So, I donate generously. This would be a good time to, support the community. We have a couple of major categories already taken up, like the Swami Vatsalya and then the Prabhavna. And then we have also received a gracious donation for some of the general expenses. But we have, additional approximately $3,000 worth of expenses we're looking for. So, grab your checkbooks and please contribute if you'd like to. With that, I think that's all the announcements we had. Thank you for staying a little bit extra this time. I know we went a little bit over, but I appreciate everyone's flexibility. Let's see. Aarti Ben, Praveen Bhai, are you with us today? Yes, we are here. Okay. Aarti Ben, if I can request you to recite Vasagaram, and we'll bring this meeting to an end. Jai Jinendra. Uvasagaram pasam vandami kamaganamukam visahara ninnasam mangala kallara avasam visahara fulingamantam कंठे धारे जो सयमणो तस्सगहरोग मारे दुष्ट जरा जंती उवसामं चिट्ठ उदूरे मंतो तुझ प्रणामो विबाहु फलो होई नरतिरिये सु विजयवा पावंति
नित्यं सुहसम्मते लब्धे चिन्तामणि कप्पपायवब्बहिये पावन्ति अविघ्नेणम् जीवा अयरा मरंठाणम् यसन्तु महायस भक्ति भर निबरण हियण तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद. Thank you and Jai Jinendra. Thank you, Jai Jinendra. Thank you, everyone. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Everyone. Jai